Again, hello everyone, this is Akshay here, and if you've been watching my journey and but feel like my SIP numbers or income are out of reach, then this video is just for you. I'm gonna show you how to kickstart your wealth building in India, even if you're starting with just 1,000 or 5,000 per month, right? And we do not need a big package here. Let me tell you that family back support भी नहीं ज़रूरत है यहाँ पे, और to be a ऐसा भी नहीं कि आपको 4 साल टेक करियर में कंप्लीट हो जाए तभी आप स्टार्ट कर देते हो. दैट इज़ नॉट the sort of prerequisite we want here. I started small too, and I will show you how I grew my SIP step by step, right? तो 5 months back मैंने एक वीडियो शेयर किया था यार about my journey, that how I'm investing 80k per month, my 10 CR plan by 35, and that has got a particular, or let's say some adequate amount of views, and that has hinged me to make more on this topic so that we can learn, grow and share together. So hello everyone, I am Akshay here, and this video is a part 3 or maybe the continuation of my wealth plan of making 10 CR by 35, right? So I may be wrong, I may be right in this journey, but definitely यार हमने शुरू किया है तो कहीं अच्छी जगह ही लैंड करेंगे. So let me give you a quick background of mine. So I'm a 26-year-old, and I'll be soon 27 in the next coming few months, and I'm working as senior software engineer at Mastercard, and my monthly salary is around okay, I cannot reveal that one now, can I? वो रिवील नहीं कर सकते यार, वो आप ग्लास डोर वगैरह ये सब देख लेना, आपको कुछ तो आइडिया मिल जाएगा इफ़ यू बेसिकली वांट टू गो इन दैट सेक्शन और नॉट. तो ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ यार कि इस पूरे टेक होम में से आई इन्वेस्ट अराउंड 80k per month, and that is some adequate portion of my take home, right? So in this video we're gonna be discussing that how can we start wealth building in India with just 5,000 per month, beginners SIP and a passive income plan. Because जब मैंने start किया था यार, I used to do with 10k, then I gradually increased to 20, and then it then becomes 40, and now it has been since quite a few months it's been 80, right? So तो 5 सेक्शन में इस वीडियो को करेंगे. पहले सेक्शन में अपन यही बात करेंगे कि स्टार्टिंग स्मॉल कैसे वर्क करता है, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस हमें क्यों चाहिए होता है, बिगिनर एसआईपी सिस्टम क्या है, एंड देन मार्केट ड्रॉप्स एंड इमरजेंसीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी दैट सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, S&P 500 ऑल टाइम हाई पे, एवरीथिंग इज ऑन ऑल टाइम हाई, राइट? तो इकोनॉमिस्ट भी बहुत परेशान है कि इस समय क्या होना चाहिए. यूजुअली क्या होता है यार, सिल्वर या गोल्ड ऊपर जाते हैं तो स्टॉक्स नीचे की तरफ होते हैं, लाइक रिवर्स एंड वाइस वर्सा होता है, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हेजिंग का, राइट? But let's not go into deep further, and let's stick to this video program. Starting small works here. So when I began my journey, I couldn't invest directly 80k per month, right? My first SIP was just maybe a 10,000, right? And even that felt huge. And for you, maybe 1,000 or 5,000 or maybe 20,000 will feel huge, right? तो सबकी स्ट्रगल यार अलग अलग वे से शुरू होती है. किसी की 2,000 से होता है, किसी का 2 लाख से होता है, किसी का BMW से होता है, राइट? बट जो कंसिस्टेंसी है, द रियल सीक्रेट इज अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट. इट्स अबाउट बिल्डिंग दैट हैबिट एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट इवन ऑन अ स्मॉल सैलरी और स्टाइपेंड, राइट? सो कंसिस्टेंट लर्निंग, राइट, इवन विथ 5,000 per month is 100x better than you're waiting for perfect time or perfect salary. तो मैं तो कहूँगा यार कि anyone can start, you should start right now. You will grow your career, you will grow your skills and career at the same time, right? तो ऐसा नहीं है, don't wait for anything, just keep on doing it whatever you're doing, right? And add the financial literacy to your plan. तो दूसरी बात कर लेते हैं, बिगिनर SIP सिस्टम क्या होता है, what I did and what I wish I had known it sooner, right? When the time I started, right? तो 60% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, लो रिस्क स्टेडी ग्रोथ होता है, एंड 20% मिड कैप फंड्स विच हैज़ अ गुड अपसाइड बट मैनेजेबल रिस्क, right? And 10% maybe at the small cap fund for long term, and 5% at golds. Golds के भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, sovereign gold bonds, ETFs and physical gold. बेस्ट यही है कि आप अपनी ETF पे डालो, एंड 5% द लिक्विड फंड, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है. 6 months ऑफ एक्सपेंसेस आपके कहीं होने चाहिए. सेट अप एन ऑटो डेबिट, राइट? सो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस. एंड भी कि इफ यू आर इन कॉलेज और फ्रेश इन योर SD जर्नी एट Mastercard, right, then the split which I just told you, it will gives you some stability, upside and discipline here, right? Now going forward with the third section, how do we handle the market drops and emergency, right? The market dips and salaries getting delayed, getting layoffs in unexpected air, and unexpected comes up, right? So this point you do not have to panic or stop your SIP, right? The best investors in India generally win by staying consistent all throughout the market conditions, right? So keep 1 to 2 months of expenses liquid in an emergency fund, and don't break your investing streak unless it is not an like life threatening emergency, I would say, right? Because compounding का वही वो है यार, मैजिक, राइट? एंड वी विल सी द नंबर्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड यू विल एबल टू रियलाइज दैट कितना ज़्यादा मैजिक है यहाँ पे, राइट?
So, but it's all about maths and numbers. So, for section 4, in which we'll discuss how I increase my investments over time and how you should also plan to do the same, right? So people ask how I jump to 10k to 80k per month SIP, right? तो ये रातों रात नहीं हुआ था, it wasn't overnight. आप मेरे चैनल पे जाओ, रुको मैं आपको ले चलता हूँ. आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको दिखेगा कि मैंने पब्लिकली सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है यहाँ पे. वी हैव कवर्ड 500 days ऑफ कोड. फिर जो हमने जो भी जर्नी है, जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, सब कुछ कैप्चर किया है, राइट? 500 days ऑफ कोड, यार आप समझ सकते हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपको अपनी जर्नी में मेहनत करना पड़ता है. Coming back to the point here, it wasn't overnight, right? Promotions in my software engineer career, freelance code gigs and consulting, ये सब मेरे केस में था. आप अपने केस में आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट. तो एवरी टाइम आई गॉट अ रेज, बोनस और साइड इनकम, आई इंक्रीज माई SIP बाई एटलीस्ट 10 to 20%, राइट? और एक स्टेप अप का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, ऑफ कोर्स, री इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा एंड नॉट जस्ट स्पेंड इट. नाउ what helped most here? Upgrading skills, making myself more valuable at work, and experimenting my new income sources, right? That what makes an extra leap here, right? Now we will discuss the actual mathematical numbers, okay? So how a 5,000 SIP can make you maybe a crorepati by retirement, right? तो और इन सब टर्म्स के बारे में बात क्या करो यार, 1 CR 2 CR 3 CR, लोग क्या बात ही नहीं करते हैं इसके ऊपर कि भाई अब मेरी तो मतलब 2 लाख की ही जॉब है या 10,000 की जॉब है, मैं CR की बात कैसे करूँ? भाई CR की बात करोगे तभी वो पहुँच पाओगे, राइट? नाउ डू यू नो दैट द स्टार्टिंग विद जस्ट 5,000 can build you a very massive wealth. Now even if you're not earning a huge salary yet, let's break it down step by step. Imagine you invest 5,000 every month consistently from your age 23 and to age 60, मतलब 37 years that you did your SIP. Now if your SIP even earns an average of 12% annual return, right? Historically it is good for equity mutual funds in India, right? By retirement your corpus will be around 3 CR, right? Now let's see the numbers. आपने यहाँ पे जो total investment किया, let me show you the graph. So total invested amount would be around 22.2 lakhs, which is nothing but 5,000 into 12 will be 37, and retirement corpus will be around 3 crores, right? Over 3 crores. So यहाँ पे you will see that this is the compounding at work, right? And you have made 3 CR by just investing 5,000 per month SIP. मैं यहाँ पे SIP को वो नहीं कर रहा हूँ यार, प्रमोट या सेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस that what I've been doing and what is working out for me, right? Now this compounding at work, time and consistency matter more than how much you start with, right? Even if you're earning a stipend, just started coding or supporting your family, this habit alone can change your future, right? Now if you increase your, let's say, SIP in as your income grows, right, even bigger corpus, then यहाँ पे जो हमारा 3 CR का कॉर्पस है वो उससे भी बड़ा होगा, राइट? सो दैट मीन नाउ वी विल टेक अ 2 सिनेरियो. तो आपने लेट्स से शुरू किया था 23 years के एज से, एंड देन you started with 5k per month, and then you doubled the amount 10k by the end of 5 years, right? फिर अगले 5 years में वापस से डबल किया, 10 को 20 किया, एंड अगले 5 years में 40k किया उसको, राइट? तो यहाँ पे बट अब जब 40k पहुँच गए, देन यू हैव बिन एन कॉन्स्टेंट इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 40k पर मंथ, राइट? यहाँ आप कॉन्स्टेंट हो जाते हो टिल द एंड ऑफ योर 60 years. वहीं आपका एक दोस्त है राहुल, उसने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ उसने लेसे स्टार्ट किया था बाय द एज ऑफ 30. ही स्टार्टेड SIP ऑफ 5,000 per month. Then after 5 years, that is in 35 to 35 years old, he invested 5,000 per month. Then in 35 to 40 year gap, he invested 10,000 per month, and then 45 to 45 invested 20,000 per month, and then 45 till 60 he invested 40k per month, because 40k is a good amount यार, मतलब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं, बट यू आर फ्री टू एक्सप्लोर द कैलकुलेटर, राइट? तो ये जो कॉर्पस बनेगा ना यार, यहाँ पे बनेगा 4.72 CR, ठीक है? बट यही, कैन यू गेस द नंबर? द वन हु हैज स्टार्टेड 23 एट द एज ऑफ 23 एंड द डिफरेंस अमाउंट वाज नॉट मच. तो जो पर्सन ए है, राइट, उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.2 CR आता है, ठीक है? एग्जैक्टली 1 crore 26 lakh 60,000 के आसपास आता है, राइट? एंड जो पर्सन बी है, जो राहुल था, उसने क्योंकि लेट शुरू किया था, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑब्वियसली कम होगा, तो 72 lakhs आता है. डिफरेंस अमाउंट इज अराउंड 48 lakhs 54 lakhs, right? So the real impact of this starting early with this SIPs. If you begin investing just 5,000 per month at age 23 and double your investment every 5 years until you reach 40,000 per month, then keep investing 40,000 until age 60, right? Your retirement corpus will grow over 11 CR, right? Now that's the power of compounding combined with discipline. Yeah, increasing investments over time. To put it simply, I can say starting early gives you money, much more time,
to grow exponentially, right? Now, in contrast, if you have started your SIP with the same SIP plan at age 30, your corpus by age 60 would be just about 4.7 CR, right? Less than half the value. Now, this makes a huge difference and just shows that why every year counts and when starting your wealth building journey, right? So whether you are a fresh software engineer or just beginning your financial goals, remember, start investing now, yeah. Stay consistent and increase your SIPs as your income grows, right? This strategy can set you up for a comfort financial free retirement, right? Financial independence भी कह सकते हैं आप इसको. Comments I need to cover from my previous videos here कि question like, can I start with less than 5,000? Absolutely, even 500 to 1,000 is more than zero, right? So grow your habit and invest more when you can, right? How do I pick my first mutual fund? So if you want, I can share you your shortlist criteria here, and we can talk in next video for that if you have this question. Now, what do I do if my family isn't supportive or I'm the only earning member, right? तो मैं तो कहूँगा यार, focus on your discipline, right? Show your family results gradually, stay consistent even if it means starting very small or low, right? How to avoid mistakes and emotional investing? तो stick to SIPs, don't try to time the market, है ना? कुछ predict करने की ज़रूरत नहीं है. Review your portfolio only quarterly, not daily. देखने से कोई फ़ायदा नहीं है. How to find for side income and upskilling? तो यही है, ब्लॉक करो अपने, ब्लॉक 15 to 30 minutes or 45 minutes a day for learning or freelancing. Small steps compound होता है यार. And if you want more details on my personal routines, मैं कैसे करता हूँ, तो drop in the comments, I'll reply to every question, or maybe your question would be featured in the next video. And last but not the least, if this video helped you, please smash that like button, subscribe and share the video with someone who is really ready to start their wealth journey from scratch. Comment your own income story below. Let's build the financial freedom together step by step. And thanks for watching. See you in the next time. In the next video, what topics you want me to cover, like, because there are some basic terms like XIR, CAGR, what is large cap, mid cap, small cap, hedging, what is hedging, gold, what is gold ETFs, right? If you want me to make a part 4 of this particular playlist in which I explain you the simple terms of the financial literacy, which I'm also learning and want to share with you, then please comment down yes, share the basic terms or whatever you feel like. If I see that those comments are gradual enough, then I will make a new video on that. Till then, keep going, bye, and take care.